a warm welcome to everyone. My name is Divya, and today is a very interesting topic that we have come about with. We always listen, we always hear this, ki show compassion to others, show compassion to others. But this is the first time, I mean, I know that, we should show compassion to ourselves, but we have a speaker who wants to, who's enthusiastic, who's passionate about self-compassion. In fact, she is a compassion coach. That's what she calls herself. And showing compassion to oneself, what does this mean? So, a warm welcome once again to everyone. My name is Divya, and Radio Diva, is a small little initiative that started during lockdown. एक हमारे सोसाइटी में सुसाइड केस हुआ और मेरा आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, तो मेरा दिमाग ठनका कि कुछ तो करा जाए, कुछ तो करा जाए. And that's how Radio Diva started, as an initiative that we vent out our emotions. And but gradually it transformed into a platform where experts from various fields, especially mental health area, they join us and they share their wisdom with us, their life lessons with us, their experiences with us, and they help us be better individuals. So we'll request each one of you be part of our happy go lucky community, which is growing every day. Follow us on Facebook and Insta, and do subscribe on YouTube by the name The Radio Diva. So a big warm welcome to our today's speaker. When she mentioned her topic, I was bowled over because it's a very different kind of topic. She wanted to talk about compassion, self-compassion, and I was so excited. So she is a dedicated psychologist. She is she has a vast experience in various fields, and she has done many certifications. If I start counting, she has done a lot, many things, right from applying CBT techniques for wellness to TA CDT techniques. And course, she has done RCBT techniques for wellness. So, she will be able to better explain what all techniques and courses that she has done. But yes, one thing that I felt, she deals in so many therapies, and she is into so many, like right from conflict management to anxiety management, anger management. She is she has great experience of parenting, parent counseling, helping bridge the gap between parents and children, which is, I'm sure many of you must be noticing, is widening with every day. So, these are very important things that she talk about, and I'm sure she will come to our show again to talk about many such topics. But today it's the day of self-compassion, something that she is really passionate about, what I felt when I spoke to her. So I'm super excited to welcome her. Welcome, Amita ma'am. Thank you for introducing me so well. So many things. I'm really feeling overwhelmed right now, Divya. So great to connect to you. And yeah, compassion is really, it has really touched my heart when I really understood about it, when I really heard about it and I studied it. It really touched my heart. So मैंने देखा कि हाँ सही है ये कि हम लोग जो हैं अपने साथ कंपैशन रखते नहीं हैं, है ना. एक तो हमें कंपैशन का पूरा नॉलेज भी नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंपैशन. सो कंपैशन इज नॉट ओनली like showing kindness or like feeling about somebody. It is beyond that. Feeling kindness for someone or showing empathy to someone, but taking some actions to help them out, that's also included in compassion, है ना. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ कंपैशन, तो हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी आदत होती है खुद को क्रिटिसाइज करने की, खुद को हर समय जज करने की. हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा नहीं किया. हम हमेशा ही दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं, दूसरों की आंखों में देखते हैं कि क्या हम कुछ सही कर रहे हैं, है ना. सो वी डोंट हैव दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर अवर सेल्फ. We don't have this much trust on ourselves कि whatever we are doing good, and it's okay. Even if we are not doing good, then be it's okay.
There is nothing to seeking for approval of others. There is nothing to show anything to others. So we as human being really have tendency to beat ourselves up. हर सिचुएशन में ना हम लोग अपने बारे में निगेटिव थॉट सोचने लगते हैं. अगर मान लो हमें कोई फेलियर आया, अगर मेरी फ्रेंड फेल होती है, देन वी विल क्या हम करेंगे, उनके साथ हम एम्पथी शो करेंगे कि इट्स ओके, फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना. वी रियली शो एम्पथी टू देम. बट अगर वही फेलियर हमारी लाइफ में आया तो हम सेल्फ बीट करने लगेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमसे होगा ही नहीं. एंड हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थॉट्स अपने लिए बनने शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज वाई हमको अपने आप को कंपैशन देने की सबसे ज्यादा जरूरत है. अपने आप के साथ काइंडनेस शो करने की और कुछ ऐसा करने की जिससे हमें एक्चुअली अच्छा फील हो, रादर देन बीटिंग अवर सेल्फ अप, खुद को ही जज करना, खुद के बारे में ही बुरा सोचना. जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर का मोटिवेशन और डाउन जाता है. जितना जितना हम अपने आप को जज करते हैं, जितना जितना हम अपने लिए सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स रखते हैं कि वी शुडंट डू इट, हम कर रहे हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं है, वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर नॉट वर्दी इनफ, इस तरीके के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं. दीज थॉट्स रियली डोंट हेल्प अस. तो ऐसे में खुद के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एंजाइटी भी होगी, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें कई बातों पे गिल्ट भी होगा. बट टू एक्सेप्ट अवर सेल्फ एज वी आर एंड सेइंग अवर सेल्फ इट्स ओके. इफ यू आर एंग्री, इट इज ओके टू बी एंग्री. इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी राइट नाउ, इट इज ओके टू फील एंजाइटी राइट नाउ. खुद को इस तरीके से प्यार से सहलाना, खुद के साथ काइंडनेस शो करना, दैट इज सेल्फ कंपैशन. और जितना जितना हम सेल्फ कंपैशन शो करते हैं ना दिव्या, इट रियली मेक्स अस हैप्पी. इट रियली हमारे अंदर जो है कॉर्टिसोल कम होता है और हमारे अंदर सीरोटोनिन बढ़ता है. इससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. वी रियली पॉजिटिविटी हमारे अंदर बिल्ड होती है, एनर्जी आती है, एंड वी आर रियली रेडी टू गो इन आवर लाइफ. लाइक जो भी अचीव करना है वी कैन डू दैट. Wow, that's beautiful, and it sounds like, it's. I think it sounds like everyone's story. I think Mohitam, Manikan sir, all of you must be, resonating with you with this. Ki how we beat ourselves, how how we are harsh to ourselves. अपने आप को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, यानी ऐसी बिल्कुल. क्लास लगाते हैं ना खुद की कि कुछ भी होता नहीं है कि भाई तुम पॉइंटिंग आउट दोज कि इसके वजह से हुआ, ऐसे तुमने किया था, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, हाउ डम यू आर, हाउ ignorant you are, how negligent you are, how lazy you are. यानी we have राइट. all kind of adjectives of ourselves. अपनी तो ले लेते हैं हम literally. Very true, very true. So Amita, so many things. Like I think you did mention the importance of self-compassion, but let's start one after another. So, what is the impact of self-compassion on our health? Because today, especially after COVID, all of us are really chasing our health. We really want to be healthy. We do understand the importance of being healthy. So, what is the impact of self-compassion on our health? So definitely, Divya, it has impact on our mental and physical health both, right? Because as right now Mohita has also discussed that it's our primitive brain which get triggered whenever anything fearful comes, any threat it comes into our life, any failure comes, any situation which we perceive that uh, it is not friendly situation to us, it is fearful situations to us. So at that time our primitive brain gets triggered, you know. And when our primitive brain get triggered, what happens that our cortisol hormones, the stress hormones, releases in our body. And our stress hormone and cortisol hormones, when again and again we are beating ourselves up, again and again we are criticizing ourselves up, the cortisol hormones increases in our body. And when the level of cortisol really increases in at that level, it is started impacting our health. Either it is physical health or it is mental health. Both of the healths are on stake. We can, like, our anxiety depression issues can be there, or like BP and sugar problems
then all the physical illnesses slowly, gradually, it will start impacting your health. The first, you will maybe your sleep patterns will get disturbed, your hunger patterns will get disturbed. But then again, it will like, if it is for a really a long period of time, then it will start impacting you, like your BP, beep, and again, and like there is no end. So as it says कि stress जो है हमारे को बहुत ज्यादा हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर टोल होता है स्ट्रेस का, तभी कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ कंपैशन हमारे अंदर नहीं है अगर अपने लिए, तो बार बार ये कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं, और जब ये बहुत सारे ज्यादा बढ़ते हैं तो इसका हमारे उसमें टोल होता है हेल्थ के ऊपर, है ना. तो फिजिकल मेंटल बोथ वेलबींग आर एट टोल if we don't if we really beat ourselves so much, अगर हम खुद के साथ कंपैशन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो. Okay, I mean, so basically, if we are not compassionate to ourselves, we increase our stress levels, and henceforth, we become prone to physical Right. and mental diseases. It Right. can lead to depression, it can lead to, trauma, it can lead to mental issues, and of course, the physical, many diseases. These days, it's proven that even diabetes is because of stress. BP, of course, you mentioned कि BP भी stress की वजह से होता है. So I think healthy रहने का one of the first step is being compassionate to yourself. Definitely. So self-compassion is really very important for being physically, mentally healthy. For overall well-being, the self-compassion is the key. Right. So, Manikan sir, you want to ask a question before I do? Go ahead. Please go ahead. I'll No, ask. no, please go ahead, sir. Please go ahead. So my question is regarding that what's first is how do we differentiate being compassionate and being proudy when it comes to ourselves? Whether I am compassionate about myself or I am proud of myself, and there's a very thin line between being egoistic as well. So first is question around that okay, this is how I'll separate myself, that I am a compassionate person for myself. I'm not proudy or egoistic. That's first question. And second question is that when it's the time that I understand, okay, now it's a time that when I'm going in a depression or I'm doing something wrong, or it's the time to take the therapy or do certain stuffs. So when that time is there, so how to identify? The next question is around that. Okay. So your first question is how to differentiate that when I have become proudy, or when I have become egoistic, and or I am showing compassion to myself. Right. Right. So self-compassion is about just acknowledging your own feelings. Self-compassion is about acknowledging those negative thoughts which are coming into your mind, and you are beating yourself up that it shouldn't come to me. If I am feeling this, there is something wrong with me. Are you getting me? I got it, but that's a part of life, because in a day we do around 100 to 200 activities, and all my activities are not right, or I would say in all my activities are not successful. Right. Right. Out of the 100 things that I did today, 2 things went very wrong, and for that I have to beat myself so that I can improve. So this is the thing. This is the right kind of a question, Manikant, which you should have asked. So okay. I should have beat myself. Now you are saying ki if I will not beat myself in that area, what will happen? I will not improve. So for my motivation level, I should beat myself. That is a motivator for me. So I would say not a motivation, but in order to improve. In order to improve. So this is the thing which we have, like these are the misconceptions which we have formed in our mind ki if we will not beat ourselves, we will not improve. And that is why we are again and again beating ourselves. And what happens with the beating ourselves, Manikant, here, that negative hormones, there are stress hormones gets released in our body. And when the stress hormones gets, if you will say something like that to yourself, that I shouldn't do I shouldn't have done this thing, and I am
I'm mad or whatever kind of ना words come into our mind about, जो भी हमारे माइंड में उस समय के लिए आने शुरू हो जाते हैं कि मैं पागल हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत गलत कर दिया। तो ये क्या करते हैं, हमें एक थ्रेट की सिचुएशन में ले जाते हैं जिसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और जब ये बढ़ते हैं ना तो हमारा फोकस और लूज होता है। और जब हमारा फोकस लूज होता है ना तो हमारे इम्प्रूवमेंट की चांसेस कम हो जाते हैं। रादर अगर हम अपने आप को ऐसे में कंपैशन दे कि इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स। अगर हम अपने आप को ये थमाते हैं ना कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स, और उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन जाएगा, हम शांत होंगे, और हम शांत होंगे तो हम ज्यादा अच्छे स्टेप्स उठा पाएंगे, हम ज्यादा फोकस्ड वे में अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। रादर सेल्फ बीटिंग करने से, जितना जितना सेल्फ बीटिंग करेंगे उतना हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमारा इम्प्रूवमेंट का कम हो जाएगा, प्रोग्रेस का हमारा वो कम हो जाएगा। एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव सम एम्बेडेड like with childhood experiences, these negative beliefs about ourselves, that we are not good enough, we are not worthy. At times now, when we are like not accepting them, that creates the major problem to us. That's why the self compassion is needed here, so that we can accept ourselves fully, that it's okay. As a human being, I can have these negative feelings, I can have these negative beliefs about myself. Let me just give compassion to myself so that they get healed. The more we are giving compassion to ourselves, these negative beliefs are okay. As a human being, we don't have to beat ourselves up for having these feelings or these beliefs about ourselves. The more we will be healed from inside, the more we will be healed from inside, the more happy hormones will be released in our system, in our body. Right. So I have a question, Yeah. Amita. Tell me, when we have self-compassion, does it shows in our relationships as well? Does it, Yeah. and has a positive impact when we are forgiving to ourselves? Because Yes. I have a feeling that if our relation with ourselves improves, it reflects in our relationship with others. So am I right in thinking that? You are really right, Divya, here, that definitely if we have compassion for ourselves, what happens that we are trusting ourselves, we are happy with ourselves. Okay, when we trust ourselves, when we are happy with ourselves, it reflects on our relationship as well. Then we start trusting others as well. When we don't give compassion to ourselves, when we beat ourselves, the insecurity level increase inside us. And when the insecurity levels increase, it starts showing up in a relationship. We start judging other people. We start not trusting, mistrusting other people as well. And the more these things will start growing in a relationship, the relationship will get strained. Distance will start happening, like in a हम relationship. ऐसा होता है क्या कि हम कवर अप करने के लिए, जैसे हम खुद के लिए कंपैशनेट नहीं है तो हम कवर अप के लिए एरोगेंस दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, बिल्कुल जज बिल्कुल करते हैं, हम बिल्कुल। अपने से अटेंशन हटाने के लिए दूसरों के बारे में बात करने लगते हैं, हम दूसरों की गलतियां गिनने लगते हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल। इवेंचुअली वी आर सेंडिंग दोज रॉन्ग वाइब्स टू अदर्स, एंड देन होता हमने क्या है अपने कि आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं, विच वी नो कि हमारे अंदर की ये कमियां हैं, एंड कई बार हमें पता होती हैं और कई बार हमें नहीं भी पता होती हैं। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि दीज थिंग्स आर इनसाइड अस, बट दे गेट ट्रिगर्ड इनसाइड अस। हम अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं उस समय। वेन एवर वी आर गेटिंग ट्रिगर्ड, किसी भी चीज पे हमें गुस्सा आ रहा है, हम दूसरे को जज कर रहे हैं, दोज थिंग्स शोज रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सेल्फ, कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस चीज के बारे में बताता है। आर यू गेटिंग मी? दैट इफ आई थिंक कि मेरा फ्रेंड जो है फेल, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि फेलियर होना बहुत ही बुरा है ना, तो आई वुड व्हाट वुड आई से कि मेरा फ्रेंड अगर फेलियर हो रहा है तो आई वुड ऑल्सो जज माई फ्रेंड।
भले ही मैं उसको बोलूं नहीं, आई विल नॉट से समथिंग बट आई वुड जज माई फ्रेंड। तो ये हमारे अंदर की रिफ्लेक्शंस हैं जो निकल निकल के बाहर आते हैं व्हेन वी आर, तो हम दूसरों के लिए पूरी तरह से कंपैशनेट हो नहीं पाते हैं। जब हम अपने लिए पूरी तरह कंपैशनेट हैं, अगर हम कहते हैं कि फेलियर इज ओके, आई कैन मेक मिस्टेक्स, तो मेरे सामने कोई मिस्टेक करेगा तो आई विल ऑल्सो शो कंपैशन टू दैट पर्सन ना, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, ऐसा तो नहीं उसकी गलती हो गई तो कोई पाप हो गया, है ना। देन वी आर मोर एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाता है फॉर द अदर पीपल। और जितना जितना रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ेगा, उतना उतना रिलेशनशिप ग्रो करता है, उतना बॉन्डिंग बनती है, कनेक्शन बनता है रिलेशनशिप के अंदर। राइट। एंड टू अंडरस्टैंड सिंपल एक चीज ना कि हम इंसान हैं, अल्टीमेटली अगर हम भगवान होते तो हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल हम सही बात है। इंसान हैं, हम धरती पे हैं, तो इसका मतलब है हम कहते हैं ना, देयर इज अ कोट, टू एयर इज टू बी ह्यूमन, टू राइट मेक राइट। एरर्स इज टू बी ह्यूमन, just being yourself and being okay with your यस। flaws, everything, and being compassionate. Let's talk about corporate world. In professional scenario, we are expected to compete. हमें ना खुद को हर वक्त मार मार के बेटर करना होता है कि ना, अगर इसने 8 घंटे काम किए तो हमें 10 घंटे काम करो, चाहे हमारी लगी पड़ी हो. We have to really step up to be able to compete with others. राइट। In those scenarios, in a professional scenario, how does self-compassion work, and especially does it affect our professional life also? It definitely affects us, but in a positive way. Okay, if we are self-compassionate about ourselves, Divya, what happens that we have started accepting ourselves fully, the way we are, the way we are not. We don't have to show ourselves to anyone. We are not seeking anyone's approval. So what happens in a, like, otherwise what will happen if you are in a like really professional life and you are working in MNC and all, you are seeing lots of uh, competition is going on, you are trying, every time you are trying to prove yourself, you are trying to become better from other person, आप दूसरों के साथ ना अपना कंपैरिजन कर रहे हो, ये आपके अंदर बहुत सारा एंजाइटी स्ट्रेस पैदा कर रहा है। द मोर एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज देयर कि यस आई हैव टू शो माई सेल्फ, आई नीड अदर्स पीपल अप्रूवल फॉर माई सेल्फ, जितना परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ता जाता है ना, हमारा फोकस लूज होता जाता है वर्क से। और जब हमारा फोकस लूज होता है तो हमारी परफॉर्मेंस में उसका फर्क आता है, और जब हमारे परफॉर्मेंस में फर्क आता है तो हमारे कॉन्फिडेंस में भी फर्क आता है। तो इट निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर चलता चला जाता है, जितना हम सेल्फ बीट सेल्फ क्रिटिकल थॉट करते हैं और ज्यादा अपने आप को पुश करते रहते हैं, मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था, ऐसे करके व्हेन वी आर रियली criticizing ourselves. Motivating ourselves is a different thing, but criticizing ourselves is a totally different thing. दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना, अपने आप को उनसे कम समझना या ज्यादा समझना, इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। और जितना जितना हम इस तरीके से अपना साथ क्रिटिकल थॉट्स रखते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है, और हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारा हैप्पीनेस, एवरीथिंग comes into a toll at that time. Right, right, absolutely true. So, the idea is not to, like work towards betterment, but don't, beat yourself up. And there's no limit. I think na, there is no limit. I mean, मैं अगर समझ लो मैं 10 घंटे काम करूं, और तो मेरे से 12 घंटे काम करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा. To compare ourselves with other people, it's very human tendency, it is also embedded inside us, है ना। So in self compassion we don't have to fight with this thing also, we have to just accept ourselves, this I am a human being and I can do comparison and I am doing comparison, and it's okay. when you will say those comparison की feelings को भी आप okay बोलोगे ना, तो उसका ना नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा आपके अंदर से, और धीरे 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 वो अपने आप आपके सिस्टम से, द मोर यू आर अवेयर ऑफ those feelings ना, सेल्फ कंपैशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ना कि बीइंग माइंडफुल ऑफ योर ओन थॉट्स एंड योर ओन फीलिंग्स एंड इन योर बॉडी। जब आप अपनी बॉडी में फीलिंग्स को माइंडफुली ऑब्जर्व करते हो ना, यू रियली फील समथिंग कि हार्ट में कुछ हो रहा है, गट में कुछ सेंसेशन हो रही है, बॉडी में कुछ हो रहा है ना।
then to just go inside yourself and just think कि क्या कर रही हूँ मैं इस समय, what kind of a thought are coming to me, and just to accept it. It's okay, I'm a human being. I can do comparison ना, अपने आप आता है, मैं जबरदस्ती तो करती नहीं, मैं जाकर के तो नहीं सोचती कि इसके बाल अच्छे और मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं जबरदस्ती तो नहीं सोचती कि ये इतना अच्छा काम कर रही है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने आप हो रहा है, वो अंदर से सिस्टम से ही उठता है। और जब वो सिस्टम से उठता है, तो द ओनली थिंग इज टू जस्ट take it to the acceptance mode. It's okay, I am a human being and I can feel this. The more acceptance mode you are, the more धीरे धीरे वो अपने आप कम हो जाएगा, एंड यू विल फील कि इन योर सिस्टम इट्स स्टार्ट लाइक रिड्यूसिंग, उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, आपके सिस्टम में शांति अपने आप उतरती चली जाएगी। I totally agree with you, अमिता मैम, कि किसी भी चीज को ना, जैसे अगर आपने दिमाग में छोटा कर दिया ना, तो उसका पावर अपने आप आपने निकाल दिया। एंड देन एक्सेप्टेंस की ठीक है, इट्स ओके, इट्स, अभी कहा जाता है ना, हैव दोस, इफ यू आर फीलिंग जेलस विद समवन, इट्स ओके, It's okay, yeah, इट्स ओके। that's true. If you are feeling envy with someone, it's okay. You are human being. You can feel envy. You can feel anger. It's okay. So Yes, yes, that's the key of self-compassion. yes. And for Palka, if she's still there, you know, we did a YouTube session on OCD, and it was a very beautiful session. जया जी ने ना ग्रुप में शेयर किया है पलका, वो YouTube लिंक, और हमारे WhatsApp जो रेडियो डीवा का WhatsApp ग्रुप है, any of you wish to be part of it, please be part of it. So last question to you, Amita, before, if anyone else has any question, you can go ahead or raise your hand. But last question to you, Amita, what are the long-term impacts of, you know, self-compassion on our life, on our spiritual life, on our overall life? Why we should actually, you know, consciously follow self-compassion? We should actually really follow self-compassion because it really builds our health. First and foremost thing, our physical health, our mental health is like really we become well with this thing, है ना? तो we should start practicing of self-compassion. सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमें इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे मेरे रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होते हैं। इससे अगर मैं खुद के साथ कंपैशन रखती हूँ तो मैं एक अच्छी मदर होती हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ होती हूँ, मैं एक अच्छी बेटी बनती हूँ, है ना? सो इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट आई प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन फॉर माई सेल्फ। इफ आई प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन फॉर माई सेल्फ, इट इज इम्पॉर्टेंट कि मुझे जो करियर में काम कर रही हूँ, द प्रोफेशन आई एम वर्किंग इन, द ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग, मेरी ग्रोथ है वहां पर, बिकॉज आई एम नॉट सेल्फ बीटिंग माई सेल्फ, तो क्या होगा, आई एम मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड वे में काम कर पाऊंगी, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्योंकि आई एम मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स वर्क, तो आई विल ग्रो इन माई करियर, इन एवरीथिंग वट एवर आई डू, राइट? सो सेल्फ कंपैशन जो है हमें वर्डली तो करता ही है, फिर देन कनेक्शन विद गॉड तो है ही है, तो एज यू स्पिरिचुअली सेड, तो डेफिनेटली अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस का लेवल है, वी आर कनेक्टेड टू अवर सेल्फ, बिकॉज दैट वे वी कनेक्ट टू अवर सेल्फ। जितना जितना हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, वी गेट कनेक्टेड टू अवर सेल्फ, एंड व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू अवर सेल्फ, वी गेट कनेक्टेड टू गॉड। उतना उतना हम भगवान के साथ कनेक्ट करते चले जाते हैं। Am I right here? So Absolutely. that's how the whole thing starts from self-compassion. Jitna compassion rakhenge all in all our areas of life, we will really grow mentally, physically, spiritually, everywhere. Absolutely. And as Paruldi mentions, if we are, you know, if we are compassionate with for ourselves, we are compassionate with others. It's, you know, the first behavior is with yourself, जो प्लेन में कहते हैं ना कि दूसरों का मास्क लगाने के पहले खुद को लगाएं, तो पहले खुद के लिए अच्छे बने, तभी आप दूसरों के लिए अच्छे बनेंगे. And as Manikant says, कि how can we train our kids to be compassionate? I think this is the last question. We will definitely call you again, Amrita ma'am. What are the practices that we should follow? राइट, तो अपने बच्चों के लिए सेल्फ कंपैशन की अगर आपको डेवलप करनी है मनिका, तो द फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फॉर योरसेल्फ। आपके बच्चे जब देखेंगे कि मेरे फादर अपने आप को बीट नहीं कर रहे हैं, मेरे फादर खुद को काइंडनेस शो करते हैं, है ना, तो दे विल लर्न इट, क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बच्चे हमसे ही सीखते हैं।
right? Then as a father, if they are doing any mistake, आपको उनके साथ full compassion show करना है. It's okay to make mistakes, बेटा. There's nothing like it. Or if you are feeling bad about something, it's okay to feel bad. It's okay to feel sad. अगर आपको इस समय गुस्सा आ रहा है, I can understand it. The more compassion you will show towards them, they will start becoming compassionate about themselves as well. वो अपने अंदर खुद उनके सिस्टम में आता चला जाएगा. Are you getting it? Yes. So that is how you can train your child to be self-compassionate. Yes, and in children's case, Manikant, I would have quoted a story, but it's a bit long story. So, but the thing is that in children's case, it's always lead by example. Whatever they see you doing, they just follow the same. You can't tell them do this, do that. Never ever. I mean, my child was scared of swimming. I had to learn swimming to tell her ki it's okay. Water is not an enemy. So anything and everything she learns only when she sees me doing it. We can't say we can't do something else and we can't tell them, we have to follow what we preach. That's true. So absolutely, Manikant, I'm sure, Amita ma'am gave us such a lovely answer and you got your answer right. So, Amita ma'am, you made it so simple, but so, important for each one of us to follow self-compassion. And how, and the last question I think that you answered, ki all the long-term impacts of self-compassion. It was amazing because you Right. have covered every aspect of our life, right from our health to our profession to our relationships to our professional aspirations. I think self-compassion is the stepping stone, is the first step to reach anywhere. So I Yes. think all of you got a very simple thing, but explain also very simply, but such an important thing. Be good to yourself before you be good to anyone else. Simple. So thank you so much, Amita ma'am. It was Thank you, such an Divya, for honor, inviting me. Thank such a privilege, such an honor, such a privilege to have you. Yes, a very important and a useful thing thank you, everyone is everyone. saying. Yeah, Love everyone that. is putting. Thank you, everyone. Thank you, Harita. Thank you. Thank Okay. Bye so bye. much, Thank you, Divya, for everyone. inviting me. I really Thank you. enjoyed this conversation. The way everyone has contributed in conversations, I really liked it. Thank you, Mohita, for your Thank you, inputs. Amita. Thank you. Wonderful session, Amita. Thank you. Good night, Thank you. Thank you so everybody. much, Good everyone. night. Please, subscribe. In this YouTube, this session will be available on YouTube. So please watch it on YouTube or forward it to anyone who's trying to compete too much and need little self-compassion. कई बार ना उल्टे तरीके से बोलने से भी लोगों को समझ में आ जाता है. And it's a very nice discussion that we had. So I think it should reach out to more and more people. So I'll share the link and be part of our Happy Go Lucky community. Almost 2.5 years of Radio Diva, and we are just trying to create awareness around health, around mental health. And we really feel, we really understand the importance of it, and we want everyone to also do. So thank you so much, everyone. It was a Thank you. beautiful Thank session. Thank you, So madam. nice. And thank you very much. And both of you are so, and our madam Mohanda is also is there. So all three, and plus Mr. our Manikant. Yes, all of you are so nice. I am very happy to join in this forum. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye.